So almost 5 years these laws, the four labor codes were in the draft form. Finally, on 21st of November, the government announced implementation of these codes. So since then, there was a little bit of ambiguity in the industry of how to implement, what to implement. So Goa Chamber of Commerce and Industries thought it would be right on our part to clear the whatever the notions the industry has, and in that context we were among the first to organize this session on the labor codes, and we have got a extraordinary response for this. The Goan industry is all out to understand what are the labor codes. They are all set to implement new labor codes. So we plan to have many more such sessions in the future so that we can help the industry to bridge the gap from whatever is required. We are getting very good support from the Chief Inspector of Factories Office and the Labour Commissioner's Office, and we want to work together to ensure that we make it a success in the state of Goa. Thank you. सर, इस सेमिनार का मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य ये है कि हमको लोगों तक ये जो नए लेबर कोड्स आए हैं वो और इंडस्ट्रीज़ तक और लेबरर और वर्कर्स तक ये सब लेबर कोड्स के जो भी नए कोड्स है वो हमको लेबर को सबको पहुंचाने हैं. तो उसी दिशा में हम लोग जो भी अंडरस्टैंडिंग में गैप है वो कैसे हम लोग क्लियर आउट करें, वही हिसाब से हम लोग प्लान कर रहे हैं. सर, बिजनेस सेक्टर के लिए इन लेबर कोड्स का क्या महत्व है? I mean, see, finally it is labor reforms. The government wants to improve the way the industry and the labor interact, and both are spokes of the same cycle. So दोनों को साथ लेके ही इंडस्ट्री को चलना है, लेबर को साथ लेके चलना है, स्टैट्यूस को साथ लेके चलना है. So how we help to put all these spokes together so that the wheel of whatever is the nation wants to move towards industrialization or whatever modernization, lot of a lot of freshness is given to it by the government. So how we help as a chamber to bridge the gap between whatever are the basic requirement, that is what is our main hetu. The main purpose of this seminar is to enlighten our HR fraternity of industry about the implications of the new 4 labor codes. There are benefits to employers and there are benefits to employees. There are some, so it's to understand how both employers and employees benefit from all this. And it's very important, labor is a very important part of industry, and we need to ensure that they are given the proper benefits, proper protection. But at the same time, industry also is having very difficult times. There are problems of ease of doing business. The wages are going up. Profitability is getting reduced. So industry also is having a lot of problems. So we need to ensure that it's a win-win for both labor and for employers also. And we hope that these 4 labor codes will bring about improvement for both employers and employees. Well, it is the labor code was announced on 21st November, so it is current topic, and it is going to be very challenging next 1 year, 2 years. So I think it's very relevant and very, very timely that we have had this seminar. Yeah, the response is very good for this program. Industry want to know what is this 4 codes. So we are going to have more sessions on this, and one session is not enough. We need more sessions, so we'll have it more. We have reached a stage in the country where there's a major reformation of the labor laws. We used to have a lot of multiplicity of laws. In fact, there are 29 labor laws which have been codified as 4 labor codes. And these 4 labor codes have come into effect suddenly on 21st November 2025, and hence we need to understand and help interpret these laws the way we have been doing in earlier times. So the significance or the importance of these laws is every person who's in business, HR,
and line managers need to understand and interpret these new reforms in a manner which will be in compliance with the judiciary. So that's the importance of these laws. Goa will have rules. Goa also has statutes. Now these statutes have not been merged in these four codes, but Goa have separate statutes not in labor but in other sectors. So those are not part of these four codes. The biggest challenge I foresee is restructuring of the salaries given the change in the definition of wages. पहले तो क्या था कि considering that we had various labor laws, हर लेबर लॉ में डेफिनेशन ऑफ वेजेस अलग था. लाइक प्रोविडेंट फंड में वेज डेफिनेशन अलग था, अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट वेज डेफिनेशन अलग था, अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट वेज डेफिनेशन अलग था, ESI एक्ट में वेज डेफिनेशन अलग था. पर नाउ विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कोड्स देयर इज गोइंग टू बी अ यूनिफॉर्म डेफिनेशन फॉर वेजेस, and employers will have to first ensure that their wage structure or salary structure is in line or in conformity with the definition of wages as provided for in the codes. MSME sector पर definitely प्रभाव पड़ेगा क्योंकि first and foremost the MSME sector is the backbone of our economy now. And अभी होगा क्या कि as a result of the implementation of the codes, as I had said earlier, there will definitely be cost implications for the MSME sector, be it on account of the provident fund outgo, subject to the limit of the statutory ceiling, ESI, gratuity, leave encashment. Definitely there is going to be an implication. Now, Goa Chamber of Commerce and Industry, it's an apex industry body, गोवा की. So हमको 117 साल हो गए अभी establish हुए. And we are basically, as a Chamber of Commerce, we are an interface between the government and the industry always. So what we would like is the best outcome for not only our members, but also for Goa's economy as a whole. And that can happen when the industry and the government are both working in sync. जब एक साथ काम करते हैं, उद्देश्य एक ही है कि इंडस्ट्री के लिए बेनिफिट हो, प्रॉफिट हो, हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए बेनिफिट हो, प्रॉफिट हो, और उसी तरह से गोवा को भी डेफिनेटली, बिकॉज हमारे लोग अगर एम्प्लॉयड होंगे, वेल एम्प्लॉयड होंगे, तो सबको बेनिफिट ही होता है. सो वाई गोवा चेंबर? बिकॉज एक माध्यम है कि गवर्नमेंट से हम लोग डायलॉग कैसे कर सकते. तो इंडिविजुअली हर एक मेंबर तो गवर्नमेंट के साथ इंडिविजुअली बात नहीं कर सकता, इट्स नॉट पॉसिबल. सो हम लोग जब एक साथ मिल के आते हैं एज अ चेंबर, एज अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, देन इट बिकम्स ईजियर टू स्पीक फॉर बोथ द साइड्स. सो गोवा चेंबर का वो उद्देश्य है. और आपने पूछा कि आज का लेबर लॉज पे सेमिनार क्यों, लेबर कोड्स पे, तो बिकॉज कंप्लायंसेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन वेदर इज इंडस्ट्री और गवर्नमेंट. और जब कंप्लायंसेस होंगे तो द वर्क स्मूदन्स फॉर एवरीबडी. इम्प्लीमेंटेशन होता है, और वो कब हो सकता है? जब हमको पता हो कि क्या कैसे करना है. So chamber has 17 committees. One of the committees is the IRHR, Learning and Development Committee. तो आपने अगर देखा है तो IRHR में Learning and Development भी इस्तेमाल किया है शब्द. That is for this precise reason कि हमें अंडरस्टैंड भी करना है नई चीज़ें क्या आती हैं, नए रूल्स लॉ जो भी होता है नया क्या होता है, और वो लर्न करके कैसे हम हमारे मेंबर्स को ग्रोथ उनकी कैसे एनहांस कर सकते हैं, और गवर्नमेंट को भी उससे असिस्ट कर सकते हैं टू रीच आउट टू द इंडस्ट्रीज. बहुत इम्पॉर्टेंट है ये सेमिनार, बिकॉज ये जो नया जो कोड्स जो आए हैं वो न्यू है, और उसका अंडरस्टैंडिंग और उसका जो इम्पैक्ट है इंडस्ट्री के ऊपर और लेबर के ऊपर जो इम्पैक्ट है वो अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो इसीलिए चेंबर ने इनिशिएटिव लिया है कि ये जो जानकारी देने के लिए इनिशिएटिव किया है. जानकारी अच्छा जानकारी होगा. सब HR लोग आए हैं अभी, हंड्रेड्स, ऑलमोस्ट अबाउट 100 HR पीपल, HR एंड अदर इंडस्ट्री people have come to and attending this program, because this is the way how it is so important. ऐसा नहीं है कि ये जो नया लेबर लॉ जो आया है वो ओनली जो एम्प्लॉयर्स को हेल्प करता है ऐसा तो नहीं है. वो बैलेंस्ड है, दोनों साइड में कुछ क्लॉजेस इंडस्ट्री के लिए उपयुक्त है, कुछ क्लॉजेस लेबर के लिए भी उपयुक्त है. सो ऐसा बैलेंस्ड है.
सो इसलिए इंडस्ट्री का वातावरण जो है वो अच्छा होना चाहिए. गवर्नमेंट का जो पर्पज़ है वो पर्पज़ गवर्नमेंट का पर्पज़ है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इनिशिएटिव. ये पार्ट ऑफ दैट इनिशिएटिव they have now come out with all these reforms, but these reforms should help industry and labor both.